T curve. Then in ordinary metal, if you see the ordinary metal, okay, so ordinary metal starts from here and then it's go like this, okay. So for ordinary metal, we have rho proportional to T, okay, and if you see in lower temperature, your rho is proportional to T5 or T cube. While in the case of superconductor, what happens, okay, if you go to low temperature, okay, a particular temperature called Tc, suddenly its resistance becomes 0, okay. So this is for your normal metal and this is your for superconductor. Now Tc, T equal to Tc, Tc is the characteristics of a superconductor, okay. Every superconductor has a fixed Tc. However, this Tc also for given element, okay, for given element, Tc also varies with its isotope mass, okay. So that is called your isotopic effect. So isotopic effect क्या है? Isotopic effect. So ये तो कल डिस्कस कर लिया था. Isotopic effect क्या है कि if we have, okay, the critical temperature, okay, Tc, the critical temperature, okay, or transition temperature okay, of superconductor okay, vary with its isotopic mass, okay. So generally your Tc is proportional to 1 upon m power alpha, okay. एक ही एलिमेंट है, उसके डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, देन आइसोटॉप के मास के साथ आपका Tc वेरी करेगा, okay. So this I can write Tc m alpha equals to constant, and alpha value is generally equal to 0.5, okay, from BCS theory. So you can also write your Tc, okay, proportional to under root m, okay, or Tc m power half equals to constant. So this is for example, if I give you value for zinc, okay, so for zinc the alpha value is 0.45, okay. Similarly, if I give you the value for mercury, that is 0.5. For mercury, this alpha is 0.5, okay. So it varies. So roughly we can take for lead it is 0.49. So we can take, okay, alpha equal to 0.5. ये क्लियर है? आइसोटोप इफेक्ट क्लियर है तुम्हारा? Yes, sir. Okay. So if you take the graph, okay, if you take the graph of what 1 upon mass and Tc, okay, it should come straight line, okay, for isotope, okay. For example, Hg, mercury can have different isotopes, okay. If you take the graph, that graph should come as a straight line. So this is your isotope effect. Now next is superconductors show flux quantization. Okay. So what is flux quantization? Suppose I have a superconducting ring, okay. मेरे पास सुपरकंडक्टर है, वो रिंग की फॉर्म में है, okay. This is my superconductor. Okay, so this is in this form.
Okay. Now temperature is T is greater than Tc. Okay. And I'm applying a magnetic field here. See, magnetic field I'm applying. So what will happen? So because now T is greater than Tc, that means now magnetic flux line will pass through the sample. So my magnetic flux lines are passing through the sample. Now what happens when you reduce the temperature Tc? Okay, so when I reduce the temperature Tc, क्या हो जाएगा? When I bring this T equal to length Tc and still Flux फ्लक्स क्या outside. फ्लक्स बाहर हो जाएगा. तो जहां पे भी सैंपल के अंदर से फ्लक्स पास हो रहा है वो सारा क्या क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा. ओके. और जो इस एनुलर रीजन में था उस फ्लक्स का क्या होगा? सर वो तो रिसाइड कर जाएगा. वो तो अंदर रह जाएगा. जो अंदर अंदर फील्ड है वो तो अंदर ही रह जाएगा इसको. ठीक है, क्योंकि जो डायमैग्नेटिक होगा वो तो मटेरियल होगा. ओके. सो मटेरियल के अंदर जो भी फील्ड है वो तो बाहर की तरह एक्सपेल हो जाएगा, अंदर का अंदर रहेगा. ठीक है. नाउ अगर मैं अब इसमें से मैग्नेट को हटा दूं, ओके, T इज लेस देन Tc एंड इफ आई रिमूव द मैग्नेट, ओके, तो क्या हो जाएगा? बाहर की लाइन तो गायब हो जाएंगी, अंदर की लाइन रह जाएंगी एंड एक करंट विल फ्लो. ओके, आई that is called persistent current. Okay, this is persistent current. Okay. Now suppose you know this E equal to what? Minus del phi upon del T. Now suppose if I'm removing this magnet, okay, now if you removing this magnet, what it will bring here? Flux change. So once there is a flux change, then what will happen? If the flux change, then there will be EMF will developed. Okay, now this EMF will produce a current. Okay, and this current value should be infinite because the resistance is zero. रेजिस्टेंस इज जीरो. ओके, रेजिस्टेंस जीरो का मतलब क्या होगा कि आपके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा इनफाइनाइट है. दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो इसके लिए क्या हो जाएगा? आपका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट. एक करंट फ्लो होगा, दैट इज द परसिस्टेंट करंट. बट व्हेन यू रिमूव दिस मैग्नेट, ओके, ये जो फ्लक्स है ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. जो ट्रैप्ड फ्लक्स है वो चेंज नहीं होगा. ओके, एंड जो ट्रैप्ड फ्लक्स है उसकी वैल्यू होती है आपकी n h upon 2e. Okay, so this much flux will be trapped. Okay, where n is number. Okay, 1 2 3, n is a number 1 2 1 2 3. Okay, so this is called your flux quantization. So this is your trapped flux. Okay, let me check. Any question is there? There's one question on this one. हाँ बोलिए. सर इसके अंदर फ्लक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा. हाँ, तो उसके बाद भी करंट होगा या करंट जीरो हो जाएगा? करंट तो रहेगा, करंट तो रहेगा इसके अंदर. ओके, उसको मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट फील्ड चाहिए ना. ये कांस्टेंट फ्लक्स है, इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट फील्ड है वहां पे. तो फ्लक्स को मेंटेन के लिए करंट तो चाहिए आपके पास में. करंट तो फ्लो होगा तभी तो ये फ्लक्स मेंटेन रहेगा. ओके, सो दिस इज h एंड h अपॉन 2e. ओके, h अपॉन 2e वैल्यू इज 0.0679 into 10 raised to power minus 15 वेबर मीटर. ओके, सो इस पे एक अच्छा क्वेश्चन भी है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. So the question is, okay, that is, I'm erasing this one, na? I'm erasing this one. So, सर वो क्या था? NH by 2e ना? h upon 2e, nh upon 2e. Okay, so question is, if a superconductive quantum interference device, okay, a squid is there. A squid is used to measure
smaller magnetic field. Okay, so we have a squid is given, okay, which consists of 3 mm ring. उसका जो diameter, उसका जो आपका ring, okay, उसका जो radius दे रखा है, that is given as 3 mm. Okay, and say it can measure 1/5,000 of a fluxon. Okay, it can measure 1/5,000 of a fluxon. Okay, fluxon. तो फ्लक्सॉन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि जो फ्लक्स होता है सुपरकंडक्टर में, that is H/2E. Okay, so H/2E, okay, H/2E is called fluxon. So it says it can measure 1/5,000 of a fluxon. Calculate the magnetic field it can detect. Okay, calculate the magnetic field it can detect. बताओ कितना आएगा? So we know magnetic field क्या होता है? Magnetic field क्या होता है? Flux per unit area. Okay, and flux value it's saying it is H/2E. H/2E, and area for this is given ring, that is a pi r square. So if you can calculate this one, putting the values, okay, so we have 1 upon pi 3.14, r is 3 mm, so 3 mm 10⁻³ square, h is 6.62 10⁻34, 2, okay, electron charge 1.19. Okay, so this should give me the value, okay, around 2.93 into 10⁻⁻1. okay, Sir, -1 टेस्ला, ये आ रहा है आंसर 0.293 आ रहा है क्या? 0.293 टेस्ला आ रहा है क्या आंसर? कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे पास तो यही आंसर है. आ रहा है? ओके, मिटाइएगा. इरेज कर दूं? नो सर. अच्छा, ये सर. now one more property of superconductor is specific heat capacity. Okay. So we know the variation of heat capacity of any metal. Okay, so and I think this is electron heat capacity. Okay, electron heat capacity. So if I plot a graph versus CV and T for a normal metal, okay, so normal metal का low temperature पे क्या होता है? CV. proportional to T. CV proportional to T T. होता है. Yes. Okay. Now if you see the superconductor, okay, superconductor. So superconductor at TC. If I say superconductor at TC, so normal, so about TC it is a normal conductor. Okay, so it will behave like same, but there is a discontinuity at TC. Okay, and after TC it varies exponentially. Okay, it varies exponentially decrease. So if I write the CV for superconductor, it is proportional to e power minus delta kBt. Okay, minus delta kBt, where delta value is B kBtc. Okay, and so in superconductor
basically we have two type of electron. Okay, one is normal electron and one is superconducting electron. So when you decrease the temperature at Tc, so these electron will जो normal electron है, these will form copper pair. Okay, so discontinuity in CV shows, okay, the existence of band gap. Okay, existence of बैंड गैप. ओके, क्योंकि तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वापस नॉर्मल स्टेट में जा रहा है, तो नॉर्मल स्टेट में जा रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये डिफरेंट बिहेव कर रहा है, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये फिर वापस बिहेव कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई गैप, एनर्जी गैप है. ओके, एंड दैट एनर्जी गैप इज गिवन बाय Eg इज इक्वल टू 2 डेल्टा, ओके, 2 B KB TC. ओके, तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि सीवी किसका ज्यादा होता है, स्पेसिफिक हीट किसका ज्यादा होता है, नॉर्मल स्टेट का या फिर सुपरकंडक्टिव स्टेट का. तो सुपरकंडक्टिव स्टेट में आपका सीवी कम होता है, स्पेसिफिक कम होता है. ओके, इसी तरह एंट्रोपी भी कम होती है. तो सुपरकंडक्टिव स्टेट है आपकी ऑर्डर स्टेट है. हाँ बोलिए. सर वो बी क्या है? बी कांस्टेंट है. ओके, बी इज कांस्टेंट. ओके, सो इफ आई plot the graph Eg upon kbt, okay, this will give you constant. B is constant. सर कम कैसे हो रहा है? फास्ट ड्रॉप हो रहा है ना, इस फास्ट ड्रॉप और इस कर्व में मैंने सही प्लॉट नहीं किया है. ओके, दिस गोज वेरी फास्ट. ओके, सो आपका ये जो सुपर कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर होता है वो दिस गो लाइक दिस. दिस इज दिस फॉर नॉर्मल मैटर. बट सर ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ बैंड गैप आएगा, हाँ, इस सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आने के बाद आएगा. बैंड गैप मतलब हाँ, दोनों स्टेट के बीच में गैप है. हाँ, तो दोनों स्टेट के बीच में ना सर. हाँ हाँ हाँ, तो एक्चुअली सुपर कंडक्टिंग मटेरियल उसमें एनर्जी बैंड गैप नहीं होता है. नहीं, आप समझ नहीं रहे. मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको ट्रांजिशन करना है, Yes, अगर sir. आपको सुपर कंडक्टिंग से नॉर्मल स्टेट में ट्रांजिशन करना है, ओके, तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा टेम्परेचर. Yes, sir. तो इसी एनर्जी को, क्योंकि आपको जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी दोगे तो जो आपके कॉपर पेयर्स हैं, जैसे उनको एनर्जी दोगे तो क्या हो जाएगा, वो वापस अलग हो जाएंगे. पेयर है, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर है बैंड गैप का. जैसे वो अलग हो जाएंगे, वो वापस नॉर्मल इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, तो यू विल अगेन कम इन नॉर्मल स्टेट. सो ये जो बैंड गैप होता है जनरली इट इज ऑर्डर ऑफ 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, now we have two type of superconductors. Okay, type 1 and type 2 superconductors. Okay. Type 1 को we called it soft superconductor, and type 2 we call it hard superconductor. ओके, सो सॉफ्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है that is very small. Okay, so if I plot a graph for a type 1 superconductor, type 1, okay, this is my type 1 superconductor, and if I plot a graph magnetization versus H, okay, magnetic intensity, so what will happen initially up to TC, okay, up to SC, this material is superconductor. Okay, this is type 1. जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बिकॉज़ इज परफेक्ट डायमैग्नेटिक. ओके, बट जैसे ही SC पहुंचेगा critical magnetic field, then what will happen, it will come to normal state, this superconducting state, and this will come again to normal state. So transition
from superconducting state to normal state is sudden. टाइप 1 का जो ग्राफ होता है mh is this sudden transition. Okay, this is sudden transition. So transition for type 1, okay, transition is sudden. Transition is sudden. Okay, and the value of SC is low. SC is around 0.1 Tesla. That's why it's called soft superconductor. Okay, while if we plot the same graph for type 2, okay, so type 2, so initially it behaves like the same. Okay, so type 2 has a two critical fields, SC1 and SC2. Okay, so the transition is not sudden. So when you apply SC1, okay, after that slowly field will penetrate. This is my -1, so यहाँ field नहीं आ रहा है. Okay, now slowly field will penetrate, and H is equal to SC2, it will again come in normal state. Okay, so this is your superconducting state. Okay, so between this normal this is a mixed state. Okay, in between this is called mixed state, and is also called vertex state. Vertex state. Okay, this is for type 2, and SC2 value is around 30 Tesla, high values. Okay, so that's why they are called hard superconductors. Transition gradual hai. So between superconducting and normal state there is a mixed state that is called vertex state. सर HC1 और HC2 के बीच में एक्सपोनेंशियली डिके होगा ग्राफ. एक्सपोनेंशियल नहीं है, स्लो ग्रेजुअल है, इसका रिलेशन नहीं है इसमें. इट इज अ ग्रेजुअल. ओके, some books they show straight line also. I am plotting little gradual. सर कई जगह तो उन्होंने तो वैसा बना दिया है, स्टेट बना के नहीं दिया नहीं सर, जैसा एक्सपोनेंशियल डिके होता है ना सर, हाँ, उस टाइप से बनाया है. हाँ, लेकिन रिलेशन थोड़ी दिया होगा. रिलेशन तो नहीं दिया ना कभी ऐसे. रिलेशन मेंशन नहीं. हाँ, तो बस वो फिर उसको ग्रेजुअल मानो. ओके, एग्जैक्टली पता नहीं कैसा होता है, ग्रेजुअल मान लो उसको. तो इसको इरेज कर दूं मैं. सर HC2 इक्वल टू कितना लिखा है? 30 टेस्ला. इसमें भी HC1 0.1 के समथिंग होगा. इसमें हाँ, वो तो एक्चुअली वैल्यू तो पता नहीं है, बट जो फाइनली मैक्सिमम जो फाइनली स्टेट आएगी उसके लिए दिस हाई है. उसमें ये लो होगा, ये भी बीच का कुछ होगा, बट हमको तो फाइनल से मतलब नॉर्मल स्टेट में कब आ रहा है, दैट इज वेरी हाई वैल्यू. तो हमको ये बताना कि हार्ड है एक सॉफ्ट है. Now the next one is Josephson effect. Okay, Josephson effect. Okay, so Josephson effect क्या है? You have two superconductors. Okay, you have two superconductors, superconductor 1. Okay, and you have in between two superconductors there are thin insulating layer. Okay, nanometer region. You have superconductor 1 and you have superconductor 2. Okay, so between two they have a insulating layer. Okay, so this geometry is called your Josephson junction. This is your Josephson junction. Okay, now Josephson effect is two types. Okay, Josephson effect is two type. Okay, one is called your DC Josephson effect. DC Josephson effect. Another is your AC Josephson effect. Okay. सर वो इंसुलेटिंग लिखा है. Insulating layer.
insulating layer. Okay. So क्या होता है बताओ जोसेफसन इफेक्ट? डीसी जोसेफसन इफेक्ट क्या होता है? एसी जोसेफसन इफेक्ट क्या होता है? एनीवन? जब हम एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे तो जो सुपर कंडक्टर दोनों के बीच में से इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में टनलिंग इफेक्ट आ जाएगा। वेरी गुड। ओके सर उसको डीसी जोसेफसन इफेक्ट बोलते हैं। और सर इसी के कारण जो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे जो इफेक्ट मिलेगा वो उसको एसी जोसेफसन इफेक्ट बोलते हैं। So we know that electron, okay, the electron here, so here also we have electron, okay, say the wave function for superconducting electron is psi1, and here say the wave function of electron is psi2. Okay, now electrons have wave nature, so there is a, and this thickness is very small, nanometer, so there's a finite probability that electron can tunnel from superconductor 1 to superconductor 2. Okay, so due to its wave nature, so even if we don't apply any bias to this junction, okay, so the current will flow in this junction. That is called your DC junction effect. Okay, so what I can write, due to wave nature, due to wave nature of okay electron, it can tunnel through the barrier, tunnel through the junction, or tunnel through the barrier. Okay, and as a consequence okay of tunneling across, okay, as a consequence of tunneling across the insulator, okay, there is a net current across the junction. Okay, even if there is a no voltage across the junction. Okay, even if there is no voltage, okay, so इसको बोलते हैं डीसी जोसेफसन इफेक्ट. ओके, सो अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, ओके, सो इन एब्सेंस ऑफ bias, okay, in absence of bias, current can flow. Okay, a fixed current can flow, a fixed minimum current can flow. So this effect is called your DC Josephson effect. Okay, now same tunnel, same barrier, if we apply some voltage, okay, so instead of fixed current, you will get a oscillation current. Okay, you'll get an oscillatory current. So that effect is called your AC Josephson effect. Okay, so so what I can write, okay, AC, if you apply potential difference PD, okay, equal to V or PD, if you apply potential difference V, okay, then a oscillatory current, okay, crosses the junction. Okay, that is called your AC Josephson effect. Now I'm not deriving these equations. Okay, I'm quickly just showing the results of this theory. Okay, sir, shall I erase this one? तो एसी जोसेफसन वाला मतलब AC वाला, हाँ. So when you apply potential difference across the Josephson junction, okay, a oscillatory current will produce. This is called your AC Josephson effect.
और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। So what is theory? So theory says if you have a wave function of superconducting electron psi1 psi2, okay, so I can solve the Schrodinger equation del psi1 upon del t, okay, that is given by mu1 psi1, okay, plus k psi2. Similarly for here I can write del psi2 upon del t mu2 psi2 plus k psi2, okay, where mu1 and mu2, okay, where mu1 and mu2 are low energy states, okay, ground states are minimum energy states of minimum energy states for superconducting electrons in both side respectively, ओके। सो यहाँ पे ये मिनिमम स्टेट है इलेक्ट्रॉन की साइड, वो μ2 है या μ1 है। जैसे आप इन पे वोल्टेज डिफरेंस लगाओगे, ओके, that will change, okay, so you can say this is a Fermi level, okay, Fermi level of chemical potential of electron here, okay, and your k is coupling constant, k is your coupling constant, okay. So now psi is the electron density, okay, and it is the phase, okay, so I can write psi1 is equal to n1, okay, e power eta theta 1, okay, and psi2 equal to n2 e power eta theta 2, okay, where n1 n2 are densities of electrons, okay, or superconducting electrons in both side, okay, and theta 1 theta 2 are their phases, theta 1 and theta 2 are their phases. So now if I directly write the results, okay, of this theory, so this theory says, okay, so this theory says that this theory gives me I equals to, if you solve if you use this wave function and solve the Schrodinger equation, this theory gives me I0 sine delta, okay, and delta phase difference or dt is equal to 2ev upon h cut, okay, so where your I0 is equal to 2k n1 n2 upon h cut, okay, and your delta is equal to theta 1 minus theta 2, okay, so if you apply voltage both sides, so mu1 minus mu2 is your 2 electron volt, okay. So these are the main equation of these theories, okay, if you solve these equations, okay, these are the main equation or result equations, this theory. So what you got this equation, if you v is equal to 0, okay, if you have a v is equal to 0, then your del upon delta t or delta phase is 0, that means your delta is constant, okay, that means if delta is constant, that means the current there will be a current I equal to I0, constant current will flow to the junction, which is called your DC Josephson effect, okay. Similarly, if you are applying voltage, okay, so if v is equal to 0, okay, your delta is constant and you get a current I equals to I0 sine delta. Due to the phase difference of electrons in both sides, you get
एक current I, this is called your DC Josephson effect. DC Josephson effect. Okay. Now, if V is not equal to 0, in that condition, what you get? You'll get your delta is equal to 2EVT upon H cut. Okay. And you will get a current. Okay. I equals to I naught. Okay. Sine 2EV upon H cut T. Okay. So it is the oscillatory current. Oscillatory current. And this is called your AC Josephson effect. This is your AC Josephson effect. Okay. Where the frequency omega is equal to T 2E V naught H cut. Okay. And if you write in terms of frequency, okay, that will be 2E upon H, 2E V upon H. Okay. And this frequency generally you have in microwave regions. Okay. In microwave regions. And here you can write that 2 upon E H cut, 2E upon E H, okay, is equal to 483.6, okay, gigahertz per millivolt per millivolts. तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं. आपको वोल्टेज दे देगा, आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा, ओके, और वोल्टेज पूछ लेगा, या वोल्टेज दे देगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा. फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, एसी करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज. इसको इरेज कर दूं मैं? यस सर. ओके, ये क्वेश्चन है, एन एसी करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज. ओके, फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको 1 गीगाहर्ट्ज. ओके, इज ऑब्जर्व्ड थ्रू ए जोसेफसन जंक्शन. ओके, कैलकुलेट द अप्लाइड वोल्टेज. कैलकुलेट द अप्लाइड वोल्टेज. वी कैलकुलेट करना है, करो, कितना आ रहा है बताओ. क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है आपको. फ्रीक्वेंसी दे रखा है 1 गीगाहर्ट्ज. ओके, और आपको निकालना है वोल्टेज. गीगा, गीगा मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय गीगा? 10 to the power 9. ओके, तो फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी का? 2EV नॉट अपॉन H. याद रखना, H कट नहीं है यहाँ पर. यही जो 2E/H आपके फ्लक्स में भी आता है. फ्लक्स में क्या आता है? N H/2E फ्लक्स ऑन. सो सीधे सीधे एग्जाम में कभी कोई सी क्वेश्चन दे देता है, यहाँ पे H कट भी लगा रहता है, लोग H कट लगा के जाते हैं क्योंकि H कट की ज्यादा आदत रहती है. अगर आपका फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, देन इट इज H कट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. सो द फ्रीक्वेंसी इज गिवन, यू नीड टू कैलकुलेट वोल्टेज. okay, the frequency is 10 to the power 9. okay, and then H is 6.6 into 10 to the power 34. okay, you have 2, that is 1.6 into 10 to the power minus 19. 2.07 into 10 to the power minus 6. so microvolt में आ रहा है ना, it is 2.07 10 to the power minus 6 volt. okay, so 2.07 microvolts. so ये हमेशा याद रखना, ये बहुत माइक्रोवोल्ट या मिली वोल्ट में आता है हमेशा ये जो क्वेश्चन होते हैं. सर, हाँ हाँ, इसमें जो ऑप्शंस गिवन आएंगे जैसे पेपर में, हाँ, वो ये
जो आपने लिखा -10⁻⁻⁶ आएगा या वो म्यू भी आएगा? ऐसा वो तो डिपेंड करता है, माइक्रो वोल्ट भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ओके, वो तो एक ही बात है ना, ये माइक्रो ही तो है, तो कैसे ऑप्शन तो कैसे भी बना सकता है वो। ठीक है ना, एक सेम क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन और है। A Josephson junction consists of two superconductors separated by a very thin insulating layer. When DC voltage is applied across the AC current is produced. Okay, a phenomena called Josephson effect. Calculate the frequency of AC current produced when DC voltage of 1.5 माइक्रोवोल्ट अप्लाइड। उल्टा कर दिया इस, और क्या आपको 1.5 माइक्रोवोल्ट दे दिया है अप्लाइड वोल्टेज, और आपसे पूछा है कि फ्रीक्वेंसी कितना है। कितना आ रहा है? गीगाहर्ट्ज में आना चाहिए। ओके, so frequency is equal to 2 EV upon H, 2 into 1.6 into 10 raised to power minus 19, okay, 1.5 to 10 raised to power minus 6 volts, 6.62 into 10 raised to power minus 34. So this should give 0.45 into 10 to power 9. 0.65 कितना आ रहा है? 0.45 0.725 आ रहा है। 0.65 हाँ, तो मेरे पास जो आंसर दे रखा है वो दैट इज 0.725, ओके, 3 गीगाहर्ट्ज। आप चेक कर लो, गलत भी हो सकता है। दिस आंसर इज गिवन 0.7, आपका 0.6 आ रहा है सुल्तान। यस तो सर 6 हाँ, तो चेक कर लेना उसको, वो आंसर में मिस्टेक हो सकता है। सो अभी सुपर कनेक्टिंग में हमारे पास एक चीज बची हुई है, एक तो आपको थर्मोडायनेमिक्स बची हुई है, थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी आपका वो सुपर कनेक्टर, और बीसीएस थ्योरी बची हुई है, वो हम कल कर लेंगे। सर 7.3 आ रहा है सर, ये आ रहा है जो ना? मैं 1.6 से मल्टीप्लाई कर हाँ रहा हूँ सर, यही आ रहा है। ठीक है, तो सही आंसर है। ओके, सो नाउ विल मीट टुमारो, और कल इसको खत्म कर देंगे। बीसीएस थ्योरी है और थोड़ी थर्मोडायनेमिक्स है, वो करके कल इसको खत्म कर देंगे हम लोग। ज्यादा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन करके देख लेना, कुछ अभी तक ज्यादा टफ क्वेश्चन आया नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, सीधे सीधे। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। ओके, ओके, थैंक यू सर। हम्म।